Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see UPSC Environment Current Affairs questions for Prelims 2024. So environment questions play a very important role in the Prelims because IFS जो selection होता है उसमें इन्वायरमेंट और क्योंकि प्रिलिम सेम होता है दोनों का फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का देयरफॉर इन्वायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इन्वायरमेंट के साथ एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही डायरेक्ट होते हैं तो आपको यू डोंट रियली हैव टू थिंक अ लॉट व्हाइल आंसरिंग दोस क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस में होते हैं तो आप इजीली एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो उसमें. So we are going to discuss 5 environment current affairs questions for CSE 2024 prelims. Starting with, consider the following statements regarding UNFCCC COP28. So UNFCCC COP28 जो है UNFCCC की मोस्टली सारी ही जो समिट्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पता होना चाहिए फर्स्ट कहाँ हुई और जितनी भी समिट्स में आपका पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ और जितनी भी यूएनएफसीसी की मीटिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो एवरी ईयर व्हेन द यूएनएफसीसी सीओपी टेक्स प्लेस यू शुड नो दैट प्रीवियस ईयर में कहाँ हुआ है, आने वाले साल में कहाँ होएगा और जिस साल जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे क्या की एलिमेंट्स हैं, कौन सी कंट्रीज ने कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं. So if you want, I can make a separate video on UNFCCC COP28. Let's go through the question first. So it was held in UAE. Second option, India presented the 5 nectar elements Panchamrit in this conference. Third, COP29 will be held in Baku. That's what I said before कि आपको पता होना चाहिए कि पहले कहाँ होएगा, आने वाले साल में कहाँ पर है और क्या जो है important decisions उस COP में लिए गए हैं. ठीक है. So which of the above statements are true? Both A and B. Second, A and C. 3, all of the above. And fourth, B and C. So take some time and write the answer in the comment section. So again, I'm highlighting the main important things which are asked in the question. COP28. What you should do in the exam hall कि आप पहले highlight कर लो कि कहाँ पे मतलब जब मैं अपना prelims देती थी तो मैं हमेशा ये करती थी कि मैं highlight कर लेती थी क्या क्या पूछा गया है. ठीक है. उससे अगर आप पहले ही उस चीज़ को highlight कर लेते हो तो फिर आपको confusion नहीं होता एग्जाम में. एंड कई बार होता है कि आपको आंसर पता होता है लेकिन आप बहुत हड़बड़ी हो जाती है. यू आर इन द panic and the stress is so much that you don't read the question also correctly. So it's very important to highlight the important parts which are asked in the question and then answer the question. Okay. So the answer to this question is option 2, which is A and C. ठीक है. ये UAE में हुई थी, that is correct. India presented the 5 nectar elements of Panchamrit in this conference. This is a wrong statement because it was not in this COP. It was in COP26, which was held in Scotland, UK में. Okay. And the third option is right. COP29 will be held in Baku, which is the capital of Azerbaijan. Okay. So let's go through the explanation. COP28 was held in Dubai, UAE, which is right. COP29 will be held in Baku, Azerbaijan. ठीक है. And India's initiative of Panchamrit was held in COP26, which was held in UK. ठीक है. स्कॉटलैंड में हुआ था ये. सो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पंचामृत जो इनिशिएटिव हुआ था वो कहाँ पे हुआ था. इट वाज हेल्ड इन यूके. ऑलराइट. नेक्स्ट, Aribada is the mass nesting site of which of the following species? First option snake, B is frog, C is fish and D is turtles. So this is a very basic question which I've added. ये आपको इतना डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ये ऑप्शंस में मिलेगा. ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं विच इज जनरली आस्क्ड. आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो तो बहुत बार पूछा हुआ है और कई बार प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो इट इज फॉर टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स. ओके. So the mass nesting site of olive ridley turtles, which is known as Aribada, it happened in February this year. ठीक है. ये एक मंथ पहले हो गया था इस साल. तो एक्सपर्ट्स ने बोला था कि एक तो क्लाइमेट और बीच कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं. ठीक है. और इनको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम भी होती है जैसे कि लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए और वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह सब बंद कर देते हैं. और there's a lot of protection measures which are taking place in order to protect the olive ridley turtles because वो बहुत mass nesting होती है. If you see the pictures, there are lot of turtles on the beach. ठीक है. तो उस टाइम पे कोई एक्टिविटी वहाँ पे कर नहीं सकते. ऑल राइट. सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ऑलिव रिडली टर्टल्स का IUCN स्टेटस क्या है. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. Alright, next, which of the following organizations released the Global Cooling Watch Report? Now, Global Cooling, ये questions जो होते हैं ना रिपोर्ट वाले, ये कुछ
मेरे ख्याल से 60-70 रिपोर्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है, ठीक है। ये बहुत डायरेक्ट भी आ जाते हैं कई बार, तो इसका ऑप्शन है आपके पास यूएनएफसीसी, यूएनईपी, आईएलओ और यूएनडीपी। सो द राइट आंसर इज यूएनईपी। यूएनईपी की मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड। तो यूएनईपी की सारी कर लेना। वैसे मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है। ऑलराइट, so it focuses on three key measures, which is passive cooling, higher energy efficiency standards, and a faster phase down of climate warning refrigerants. ठीक है, which is a big challenge to the global warming. And aligned with the global cooling pledge, the report aims to reduce cooling related emissions and promote sustainable cooling. It recommends incorporating these measures into building codes and utilizing financial instruments to drive the demand for high efficiency products. ठीक है, तो ये रिपोर्ट के बारे में दिया है कि रिपोर्ट किस लिए होती है, तो इतना नहीं पूछते, बट ये पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है, ठीक है। Next question. Atmospheric rivers are expected to bring heavy rains, flooding and heavy rainfall in which of the following countries? Now this is a very new concept, atmospheric rivers. This is a very important concept from the mains perspective, because mains में इस तरह के questions आ जाते हैं geography में कि जो भी नए geographical events take place करते हैं कहीं पे भी all around the world, they play a very important and significant role in the mains perspective. So please do read the atmospheric rivers. और लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन कि यह कहाँ पर अभी रेनफॉल हुआ था, तो विच कंट्री वाज द वन विच वाज अफेक्टेड। सो द ऑप्शंस आर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको एंड ब्राजील। ऑल ऑफ देम आर अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। सो द राइट आंसर इज A, USA. ठीक है, let's just read through the atmospheric rivers. So atmospheric rivers are relatively long, narrow regions in the atmosphere, like rivers in the sky, and they transport most of the water vapor outside of the tropics. ठीक है, one well-known atmospheric river called the Pineapple Express picks up warm, moist air near Hawaii, and when the Pineapple Express hits land in the western United States and Canada, it causes heavy rain and snow. So in California, it can cause up to 5 inches of rain in a day, which is like too much. ठीक है, atmospheric rivers typically occur in the extratropical North Pacific, Atlantic, Southern Pacific and South Atlantic oceans, often making landfall on the west coast of North and South America. Other regions that experience atmospheric river landfalls include Greenland, Antarctic and South Central United States. Okay, so atmospheric rivers is a very important geographical फिनोमेना। तो एक बार इसके आप फोटोज वगैरह देखो, गो थ्रू द वीडियोज इन यूट्यूब, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट exactly it is, and more important from the mains, as I've told you before, but you should know कि ये हो रहा है तो ये कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, ये सब जो स्पीशीज होती हैं, जो स्क्विरल हो गई, बैट्स हो गए, टर्टल्स हो गए, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई, ये बड़ी फेवरेट टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के। और प्रीवियस ईयर्स में इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड स्पेसिफिकली अबाउट द बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, इन सब के बारे में तो ये पता होना चाहिए। एंड बहुत कुछ स्पीशीज होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको शंकर आईएएस की बुक में बहुत सारी मिल जाएंगी, बट उनके क्या आप आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ के कौन से शेड्यूल में है, कौन से स्टेट में प्रोडोमिनेटली मिलता है, what are the threats to the to the particular species, you should know all these things. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, maintain a book and write all of the species which are frequently asked in the previous years and the species which are in news in that specific year. वैसे तो mostly सारी ही पता होनी चाहिए, but जो news में होती हैं they play a very important role. ठीक है, so go through the species which are which are in news. All right, so it is found in Arunachal Pradesh. ठीक है, स्टेट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कौन से स्टेट में मिलती है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और वाइल्ड लाइफ के कौन से शेड्यूल में है मेंशन। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, it is found in Arunachal Pradesh. IUCN status is not vulnerable, it is critically endangered. This is a very important species, flying squirrel. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन वाइल्ड लाइफ शेड्यूल एक्ट, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1। ठीक है, तो फर्स्ट में है, मतलब सबसे ज्यादा इसको प्रोटेक्शन मिलती है। दिस इज ऑल्सो राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Both A and B, A and C, all of the above and none of the above. So the right answer would be A and C. Let's see the explanation once.
So it is a rare nocturnal flying squirrel species found in Namdapha Tiger Reserve in Arunachal Pradesh, India. It is distinct from the red giant flying squirrel and another species in the same ecosystem, primarily due to the prominent tuft of hair on its ears. The difficulty in locating this species led to concerns that it might have been taken for the red giant flying squirrel or worse, फेस एक्सटेंशन. ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए. नामदाफा टाइगर रिजर्व, आई थिंक एक बार 2018 में या 19 में there was this question specifically of this tiger reserve in Arunachal Pradesh. I'm forgetting the name. तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए. हाँ, दैट वाज पखुई. ठीक है, पखुई कहाँ पर है. सो आई थिंक आई हैव मार्क दैट क्वेश्चन रॉन्ग. सो ये सारी चीजें आपको बहुत स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए कि टाइगर रिजर्व कौन से कहाँ पर है, कौन से नए न्यूज में है या नए गवर्नमेंट ने अभी निकाले हैं. टाइगर सेंसस में क्या है, कौन से मेथड्स यूज करते हैं टाइगर को एस्टिमेशन करने के लिए कि कितने हैं. तो ये आई थिंक देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन एम स्ट्राइप्स आल्सो. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड again I'm telling you that environment and biodiversity questions are they are very important in the prelims, so don't neglect here. environment हम बाद में कर लेंगे. Please go through the questions, and if you're not willing to read too many books, just go through the previous year's questions. वो आपको एक idea दे देते हैं कि कौन से questions आते हैं उसमें. ठीक है, so thank you so much guys. I'll come again with another current affairs questions videos. Thank you so much. Take care. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel.